Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. And we were studying about number system that is also called data representation. और बहुत सारे कन्वर्शंस हम लोगों ने सीख लिया है. अभी आज हम लोग करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, यानी कि पॉइंट वाले बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, नॉर्मल बाइनरी को अगर डेसिमल में करना रहता सो दैट इज वेरी इजी. ठीक है, जैसे decimal to binary we have to divide it by the base of binary, that is 2, and binary to decimal we have to multiply it by the base of binary, that is 2. ठीक है, ये तो हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है. अभी आज क्या करना है, हमें पॉइंट वाले नंबर को कन्वर्ट करना है. तो ठीक है, करते हैं इसको. जैसे इफ यू रिमेम्बर दी प्रीवियस वीडियो, व्हाट वी डिड इज वी जस्ट रोट दिस क्वेश्चन एज इट इज, थोड़ा सा गैप छोड़ के. वही सेम चीज अभी भी करना है. तो आप क्या करो, इसको लिखो थोड़ा गैप छोड़ के. 1 0 0 एंड दिस पॉइंट, एंड देन वी हैव 1 1 0 1. ओके, सो 1 1 0 एंड 1. ठीक, फिर क्या करना है, इंडेक्सिंग इधर रिवर्स इस साइड से हमें इंडेक्सिंग करना रहता है. तो ये है 0th पोजीशन पे. ठीक है, ये है पहला पोजीशन, ये हमारा है दूसरा पोजीशन, सेकंड पोजीशन. ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू डू इट हेयर ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेकिन ये इसको याद रखना, ये हमारा -1, ये -2, ये -3 एंड दिस वन -4. ठीक है, नाउ लेट्स डू इट. 1 into 2 to the power, how much? This 2, plus 0 into 2 to the power, this 1, plus 0 into 2 to the power, this 0. Okay, then again plus, फिर ये 1 into 2 to the power, this -1, plus this 1 into 2 to the power -2, plus 0 into 2 to the power -3, plus 1 into 2 to the power -4. Okay, now let's solve it. 1 into 2 cube is, sorry, it's 2 square. 2 square is 4, plus 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, प्लस 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही, प्लस 1 into 2 to the power -1, that means 1 into किसी का भी पावर माइनस, मतलब this whole thing is below 1 by 2, 2 to the power 1, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 into 2 to the power -2 means that is 1 by 2 square, प्लस 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 into 2 to the power -4 means 1 into 1 by 2 to the power 4. Okay, I guess you already know these things. Now let's solve it further. So 1 into 4 is 4, plus these 0 we can eliminate, or if you want to write, let's write it also. 0 plus 0, plus 1 into 1 by 2, that means how much, 1 by 2 only, plus 1 into 1 by 2 square, that is 1 by 2 square is 4, plus this 0 plus this 1 into 1 by 2 to the power 4, that means 1 by 2 to the power 4 is how much, 16. Okay, now let's do it. So we are having 4 plus 1 by 2, 4 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 16. Okay, now what we can do it, 4 plus 1 by 2 is how much, 0.5, plus 1 by 4 is how much, 0.25, plus 1 by 16 is how much. So 1 by 16, let's divide it, 16 and this 1, so 16 zeros are 0, subtract 1. ठीक है, पॉइंट डालो तो 0, अब भी नहीं हो रहा, so 16 zeros are 0, subtract करो 10, पॉइंट की वजह से एक और 0, तो 16 6 are 96, subtract करो तो 4, पॉइंट की वजह से एक और 0. ठीक है, now 16 3s are 48, so we have to go with 16 2. So 16 2s are 32, subtract करो 8, पॉइंट की वजह से एक और 0. ठीक है, 16 5s are 80, subtract करो, कुछ नहीं बचा और ये हमारा कंप्लीट. सो 0.0625, so it will be 0.0625. okay, now we just have to add it, 4 plus 0.5 plus 0.25 plus 0.0625. okay, let's add it here. So we have 4.0, and then we have 0.5, and then we have 0.25 and 0.0625, 0.0625. Let's add it. Okay, so we are having 5 and 2, and 6 plus 5 is 11 ka 1, carry 1, 5 plus 2 is 7 and 1 8.
and this point and this 4. So answer will be how much? 4.8125 and don't forget to mention the base. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है कि बाइनरी से ऑक्टल सॉरी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, सो बेस हमारा क्या हो जाएगा? 10. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Okay, now let's move to the next question. So next question we are having 1101.011. ठीक है, अब इसको है ना वो शॉर्टकट से करते हैं. जैसे पिछला वीडियो में आपको शॉर्टकट सिखाया गया था कि पॉइंट के पहले वाले को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो क्या करना है, हमारे पास है 1101. क्या है ये 1, ये 1 का डबल 2, ये 2 का डबल 4, ये 4 का डबल 8. जहां जहां 1 है उसको लेना है, जहां जहां 0 है उसको नहीं लेना है. ठीक है, तो हमें क्या लेना है, 8 लेना है, 4 लेना है, 2 को नहीं लेना और फिर 1 को लेना है. सो 8 प्लस 4 इज 12 प्लस 1 13. सो दैट मीन्स इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 13 आ जाएगा. अब बाकी इसको करते हैं. सो हमारा क्या हो जाएगा, 13 प्लस, और यहाँ पे अगर नंबरिंग करें, ये -1, ये -2 और ये -3. तो 13 प्लस 0 इंटू 2 का पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -3. ठीक है, तो वी हैव 13 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही बन जाए. तो 1 इंटू 2 का पावर -2 मीन्स 1/2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 का पावर -3 इज 1/2 क्यूब. लेट्स सॉल्व इट. सो वी हैव 13 और 0 को हटा देते हैं, प्लस 1 इंटू 1 इज 1/2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1/2 क्यूब इज 8. Okay, let's solve it. So we are having 13 plus 1 by 4 is what? So 1 by 4 is 0.25. Okay, plus 1 by 8 is what? So 1 by 8 will be 0.125. Okay, so it will be 0.125. अब क्या करना है, कुछ नहीं, ऐड कर देते हैं. So हमें 13.000 and then we have 0.25 and then we have 0.125. ठीक है, लेट्स ऐड. तो हमारा 5 प्लस 2 इज 7, 2 और 1 3 is 031. So answer will be 13.375 and don't forget to give the base. So base हमारा इस ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है. So this is our answer. Okay. Okay, now let's move to the next slide. Okay, so octal to decimal conversion. So octal to decimal conversion we'll be understanding in the next video. अभी के लिए हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं. So next video में octal to decimal conversion भी हम लोग सीख लेंगे. Okay.